Hello students, in this lecture we will study what is the average power consumed in maintaining the current in the different elements. Means what is the average power consumed by a circuit which is purely resistive. Again, we will calculate what is the average power consumed by a circuit which is purely inductive. And what is the average power consumed by the circuit which is purely capacitive? Let me calculate one by one. This is a small video and the easy topic. Average power consumed by AC circuits. First, pure resistive circuit. We will calculate this average power over the complete cycle of AC. As we know that power average is equal to work divided by time. Now what is work? Integration of dW divided by time. What is dW? dW divided by dt is equal to P instantaneous. तो ये क्या आ गया मेरे पास 0 to t P instantaneous dt divided by t. Therefore we can write that is 1 by t integration of 0 to t E instantaneous I instantaneous dt. You can write 1 by t 0 to t E will be equal to E naught sin omega t. If the alternating EMF is E naught sin omega t, alternating current will be equal to I naught sin omega t. In a circuit which is pure resistive. In pure resistive, what is the characteristic of pure resistive circuit? The phase difference between current and voltage is zero. They are in same phase. Here the phase of voltage is omega t. Therefore, current phase will also be omega t dt. From this 1 by t E naught constant, I naught constant, integration 0 to t sin square omega t dt, that is E naught I naught by t 0 to t 1 minus cos of 2 omega t divided by 2 dt. This will be equal to E naught I naught divided by 2t 0 to t dt minus 0 to t cos of 2 omega t dt. The integration of a trigonometric ratio over the complete cycle is always equal to 0. Therefore, we will have now P average is equal to E naught I naught divided by 2t. और यहां से क्या आ गया मेरे पास 0 से t से क्या आ गया dt का क्या आ गया t. t से t कैंसिल हो गया तो P average I will have E naught by root 2 I naught by root 2. What is E naught by root 2? That is E virtual I virtual. Or you can say that this is EV square by R, or you can say that this is IV square R. So power consumed by an AC circuit which is pure resistive in nature, that is equal to IV square R. Now we calculate what is the power consumed by AC circuit, average power consumed by AC circuit which is pure inductive.
प्योर इंडक्टिव सर्किट क्या है आपके पास? प्योर इंडक्टिव सर्किट। क्या करें? सेम प्रोसेस अप्लाई करके चलेंगे। P average is equal to total work done upon time, that is equal to 1 by T integration of dW from 0 to T, that is equal to 1 by T 0 to T P instantaneous dt, that is equal to 1 by T 0 to T P instantaneous is EI dt, that is 1 by T 0 to T E is E नॉट साइन ओमेगा टी। व्हाट इज आई? अब इंडक्टिव सर्किट के अंदर फेज जो है आपके पास करंट का और वोल्टेज का सेम नहीं होता। वोल्टेज लीड्स द करंट बाय ए फेज ऑफ पाई बाय 2, देयरफॉर करंट इज आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 dt। तो यहां से मैंने ई नॉट कॉमन निकाल लिया, आई नॉट कांस्टेंट है बाहर निकाल लिया, डिवाइडेड बाय टी, और ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 ये हो गया मेरे पास 0 टू टी साइन ओमेगा टी इंटू माइनस कॉस ओमेगा टी डी टी। तो ये क्या हो गया मेरे पास यहां पर? ई नॉट आई नॉट डिवाइडेड बाई टी विद माइनस साइन, और साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी क्या होता है? 0 टू टी साइन ऑफ 2 ओमेगा टी डी टी डिवाइडेड बाई 2। व्हाट इज साइन 2 थीटा? साइन 2 थीटा इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये हमारे पास आ गया। अब उसी तरह से ओवर द कंप्लीट साइकिल दिस इंटीग्रेशन विल बी इक्वल टू 0, therefore power average in pure inductive circuit is 0. Very important thing, no power is consumed by the inductor. The name of inductor is also choke coil. So in controlling AC we will use choke. मान लो हमें 200 वोल्ट का 100 वोल्ट बनाना है एसी का, तो हम रास्ते में बीच में क्या लगा करके चलेंगे? तो हम रास्ते में बीच में इंडक्टर लगा करके चलेंगे। क्यों इंडक्टर लगा करके चलेंगे? बिकॉज इट विल कंज्यूम नो पावर। वी कैन ऑल्सो यूज द कैपेसिटर of definite capacity because the capacitor also consumes no power. Average power consumed by the capacitor is 0 over the complete cycle. We can prove this. How we can prove this? इसी में मैं डिस्कस करके चलता हूं. This is inductive. Now I am taking capacitive, pure capacitive circuit. अब प्योर कैपेसिटिव सर्किट में क्या होगा भाई? पावर एवरेज का फार्मूला तो W बाई टी यही होगा, 1 बाई टी डी डब्ल्यू पी इंस्टेंटेनियस डी टी ई आई डी टी। नाउ व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन आई? नाउ इफ द relation of voltage is E naught sin omega t, the current in capacitor is ahead of voltage by a pi by 2. तो ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 आ जाएगा। यहां पर माइनस की जगह क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। प्लस आ जाएगा तो ये हमारे पास क्या होगा? यहां पर ये हमारे पास प्लस रहेगा, ये हमारे पास क्या रहेगा? प्लस रहेगा, और ये क्या हो जाएगा? वापस यही है कि ओवर द कंप्लीट साइकिल एवरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैज the integration what? 0. Therefore power consumed by pure capacitive circuit will also be 0. Right? Thank you.